अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बिजनेस इकनॉमिक्स ECO 400 के चौथे लेक्चर में खुश आमदीद। आज के लेक्चर की कुछ इब्तिदा इस तरह से करेंगे। विल ट्राई टू रिव्यू द प्रीवियस लेक्चर फॉर 5 मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो सबसे पहले हम पिछले लेक्चर को रिव्यू करते हैं चंद मिनट्स के लिए कि हमने क्या सीखा पिछले लेक्चर में, और उसको कनेक्ट करेंगे आज के लेक्चर के साथ। हमने पिछले लेक्चर में सीखा कि सप्लाई क्या चीज़ होती है, रसद क्या चीज़ होती है। उसके बाद हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई जो है कैसे डिफ़ाइन करते हैं। हमने देखा कि लॉ ऑफ सप्लाई में हमने देखा कि सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई कम हो जाती है। उसके बाद हमने देखा, हमने इस लॉ ऑफ सप्लाई को एक टेबल के ज़रिए और डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन किया, और हमने ये रिलेशनशिप डेवलप किया कि अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, और विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन वी गॉट ए पॉजिटिवली स्लोप सप्लाई कर्व। उसके बाद हमने एक्सप्लेन किया कि प्राइस के अलावा कौन से फैक्टर हैं, कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं जो कि सप्लाई को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। हमने देखा कि देयर आर 4 other factors that can alter the supply of the product, and one of the factor was the prices of inputs, number 2 technology, number 3 expectations of the sellers, and then finally number of sellers in the market। उसके बाद हमने दोनों फोर्सेस जो है मार्केट की, जो कि हमने अलग-अलग पढ़ी, डिमांड और सप्लाई, तलब और रसद, इनको हमने इकट्ठे किया एक ही टेबल में, एक ही डायग्राम के ज़रिए, एक ही टेबल में हमने इनको एक्सप्लेन किया। एंड वी ट्राइड टू ब्रिंग द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, और हमने ये देखा कि मार्केट में तवाज़ुन कहाँ पे होता है, मार्केट में इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, मार्केट कहाँ पे इक्विलिब्रियम में होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई आपस में बराबर होती है। या हमने ये देखा जहाँ पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, वो जो है पॉइंट, दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इन द मार्केट, एंड एट दैट पॉइंट द प्राइस विच वी हैव इज नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस। और उस पॉइंट पे जो डिमांड होती है, क्वांटिटी होती है, दैट इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई। उसके बाद हमने देखा पिछले लेक्चर में कि किस तरह, कौन से, व्हाट आर द 2 एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज। अगर हम ये कहते हैं कि अगर सपोज इफ द प्राइस इज अबव देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, एनी प्राइस अबव देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द मार्केट, मार्केट में क्या होगा। तो हमने ये देखा कि अगर प्राइस ऊपर हो इक्विलिब्रियम प्राइस से तो क्या होगा, उस पे सरप्लस होता है मार्केट में। हाउ वी कैन डिफाइन सरप्लस, हमने देखा अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो चीज़ों की सप्लाई ज़्यादा होगी, जब सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होती है तो जब प्राइस ज़्यादा होती है तो सप्लाई ज़्यादा होगी, और प्राइस का दूसरा इफेक्ट डिमांड पे, और बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड कम हो जाएगी, तो सप्लाई और डिमांड का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, एंड दैट गैप इज नोन एज द सरप्लस। सो एनी प्राइस अबव देन द इक्विलिब्रियम प्राइस क्रिएट्स सरप्लस और एक्सेस सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। एंड दूसरी जो चीज़ हमने देखी कि एनी प्राइस बिलो देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, कोई ऐसी कीमत जो इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे है, दैट क्रिएट्स शॉर्टेज इन द मार्केट। अब वाई, जब प्राइस कम होती है तो क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, एंड बाय लॉ ऑफ सप्लाई क्या होगा, उस चीज़ की सप्लाई कम होना शुरू हो जाती है। तो जो गैप है डिमांड और सप्लाई का बढ़ना शुरू हो जाता है, डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, और डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो द गैप बिकम वाइडन एंड देन दिस गैप इज नोन एज द शॉर्टेज ऑफ द प्रोडक्ट मार्केट। लेकिन हमने ये भी देखा कि देयर आर ऑटोमेटिक फोर्सेस आर स्टेबलाइजर्स इन द मार्केट दैट ब्रिंग्स इक्विलिब्रियम इन द मार्केट बैक। सो हमने देखा जब शॉर्टेज होती है तो क्या सूरत हाल होती है, इन केस ऑफ शॉर्टेज व्हाट विल हैपन टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट।
व्हेन देयर इज एक्सेस डिमांड तो प्राइस क्या होगी, बढ़ना शुरू हो जाती है। जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लायर्स के लिए इंसेंटिव होता है टू प्रोड्यूस मोर एंड सप्लाई मोर इन द मार्केट। तो विद व्हेन देयर इज अ शॉर्टेज तो ऑन द डिमांड साइड प्राइस बढ़ना शुरू होती है, डिमांड कम होना शुरू हो जाती है, और ऑन द सप्लाई साइड सप्लाई बढ़ती है। तो डिमांड जब कम होती है, सप्लाई बढ़ती है, तो ये दोनों फोर्सेस काम करती हैं एंड मार्केट दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाती है। उसके बाद हमने देखा कि हाउ वी कैन एनालाइज द इक्विलिब्रियम इन द मार्केट, व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़। तो उसमें हमने डिफरेंट सिनेरियोज हमने डिस्कस किए, हमने बहुत सारे ग्राफ ड्रा किए कि किस तरह हम एक्सप्लेन कर सकते हैं उस सूरत हाल को। तो हमने क्या कहा कि अगर हम सपोज डिमांड को बढ़ाते हैं, सप्लाई वही रहती है, तो वो किस तरह इक्विलिब्रियम प्राइस को, क्वांटिटी सप्लाई को इफेक्ट करती है। और दूसरी हम साइड पे हमने ये देखा अगर हम डिमांड को वही रखते हैं, सप्लाई चेंज करते हैं कम या ज़्यादा, हाउ दिस चेंज कैन इफेक्ट द प्राइस एंड क्वांटिटी इन द मार्केट। उसके बाद हमने ये भी देखा कि अगर हम दोनों को बायक वक्त चेंज करते हैं, यानी एक को बढ़ाते हैं दूसरे को कम करते हैं, यानी तलब को बढ़ाते हैं रसद को कम करते हैं, हाउ दिस change will bring equilibrium, change in equilibrium and price, equilibrium change in equilibrium price and equilibrium quantity, demand and supply. So this was the overview of the previous lecture. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो हमने डायग्राम बनाए थे लेक्चर में आपने बनाए होंगे और आपने बहुत ज़्यादा उनकी प्रैक्टिस की होगी, आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद आज के लेक्चर की हम इब्तदा करते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या सीखेंगे? आज का लेक्चर जो है इलास्टिसिटी के बारे में है और इसमें हम क्या सीखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट व्हाट इज़ इलास्टिसिटी, व्हाट वी मीन बाय इलास्टिसिटी। जैसा कि हमने दो फोर्सेस पढ़ी मार्केट की, डिमांड और सप्लाई साइड, डिमांड एंड सप्लाई, तो दोनों की इलास्टिसिटी की बात करेंगे और उसके बाद हम एक दो एग्जांपल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सप्लाई एंड डिमांड इलास्टिसिटीज़। तो आज शुरू करते हैं आज का लेक्चर, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी। Now, how we define elasticity? Basically, it is the concept that allow us to analyze supply and demand with greater precision. It is the measure of how much buyers and sellers respond to change market condition. Basically, this is the practical application of the demand and supply which we have learned in the previous chapter. पिछले चैप्टर में जो हमने डिमांड और सप्लाई की बात की, हमने ये कहा कि लॉ ऑफ डिमांड की वजह, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अगर प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, लेकिन we have not seen that how much change in price will bring how much change in demand. प्राइस में कितनी तब्दीली आए तो उससे डिमांड में कितनी तब्दीली आएगी, तो we have not seen that. So we would like to see that अगर प्राइस में अगर 5% बढ़ती है तो how much there will be decrease in demand, whether it decrease in demand will be more than 5% or less than 5%. तो ये जो चीज़ है, so we would like to measure this change in demand and price practically with the help of with the concept of elasticities. तो सबसे पहले हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी टाइप्स हैं इलास्टिसिटी की इन टर्म्स ऑफ डिमांड। उसके बाद सप्लाई इलास्टिसिटी की बात करेंगे और फाइनली एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ हाउ वी डिफाइन price elasticity of demand. Now, price elasticity of demand is a measure of how much the quantity demand of a good responds to a change in the price of good. In other words, we can say that price elasticity of demand is the percentage change in quantity demand given a percentage change in price, right? So this is the price elasticity of demand. What are the determinants of price? What are the factors that can affect the price elasticity of demand? Number one is the availability of substitutes. जो substitute हैं चीज़ों के, so that can alter or affect the elasticity of demand, price elasticity of demand. If there are more substitutes available, the larger the number of substitute available, close substitute available of the product,
तो the demand will be more elastic. If less substitutes are available, the demand of the product will be inelastic. Now, the second factor that can affect the elasticity of demand, that is the necessities versus luxuries. So, if the good is luxury, the demand is more elastic. If the good is necessity, the demand is inelastic. So, the products, luxury, what we mean by luxury? If the product, for example, like car, AC, refrigerators, these are the kind of product which are known as luxury products. So इन जो चीज़ों की जो इलास्टिसिटी है, इन चीज़ों की जो इलास्टिक इन चीज़ों की जो डिमांड है वो दैट इज़ इलास्टिक डिमांड. एंड द प्रोडक्ट विच आर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, लाइक फूड की बात करें, शेल्टर की बात करें, क्लोथिंग की बात करें, तो इन चीज़ों की जो इलास्टिसिटी है, उनकी जो डिमांड है, दैट इज़ इनइलास्टिक. एंड डेफिनेशन ऑफ द मार्केट, अगर जो प्रोडक्ट है नैरोली डिफाइंड है तो उसके सब्स्टिट्यूट्स जो हैं, जो चीज़ हैं ईज़िली अवेलेबल होती हैं, उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं ईज़िली अवेलेबल होते हैं, तो उस केस में क्या होगा, उसकी जो डिमांड है मोर इलास्टिक होगी. अगर जो मार्केट है इट्स नॉट नैरोली डिफाइंड, इट्स वेरी ब्रॉडली डिफाइंड, तो इन दैट केस द सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर नॉट ईज़िली अवेलेबल, आसानी से दस्तयाब नहीं होते उनके जो नेमुल बदल हैं चीज़ें, तो क्या होगा, जो डिमांड है वो लेस इलास्टिक होगी. सो द टाइम हॉरिजन एक ऐसा फैक्टर है जो कि इलास्टिसिटी को इफेक्ट कर सकता है. अगर द टाइम पीरियड इज शॉर्ट, in that case the demand for the product is inelastic. If the time period is longer, the demand tends to be more elastic. So these are the four factors that can affect the elasticity of demand. कौन कौन से फैक्टर्स हमने देखे, जो अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर किसी चीज़ के ज़्यादा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, तो हम ये कहते हैं द डिमांड ऑफ दैट प्रोडक्ट टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक. अगर कम सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, कम नेमुल बदल अवेलेबल हैं, तो उसकी डिमांड जो है कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होगी. ना उसके बाद हमने बात की दूसरे फैक्टर की, विच इज़ वी हैव कंपेयर्ड द नेसेसिटीज़ वर्सेस लग्जरीज. तो हमने ये देखा कि जो लग्जरीज प्रोडक्ट्स होती हैं लाइक कार, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, टेलीविजन्स, उनकी जो डिमांड है कंपैरेटिवली मोर इलास्टिक होती है, और जो प्रोडक्ट नेसेसिटीज़ हैं लाइक फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एक्सेट्रा, उनकी जो डिमांड है कंपैरेटिवली इनइलास्टिक होती है. नो मार्केट की हमने बात की, मार्केट अगर नैरोली डिफाइंड है तो डिमांड मोर इलास्टिक होगी बिकॉज सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल होते हैं. अगर डिमांड वाइडली डिफाइंड है, दैट्स इन दैट केस सब्स्टिट्यूट इजीली अवेलेबल नहीं होते एंड द डिमांड विल बी कंपैरेटिवली इनइलास्टिक. लास्ट जो फैक्टर हमने बात की, लास्ट डिटर्मिनेंट हमने देखा जो कि इलास्टिसिटी को इफेक्ट कर सकता है, एंड दैट इज द टाइम हॉरिजन. सो इफ द लॉन्गर टाइम पीरियड, the longer the time period, the more elastic the demand. If the time period is less, if the time period is short, the demand or the price elasticity is the demand tends to be less inelastic, less elastic. Now how we can measure, how we can calculate the price elasticity? Basically the price elasticity of demand is computed as the percentage change in the quantity demand divided by the percentage change in price. इस चीज़ को अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि हम किस तरह जो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं एक एग्जांपल के ज़रिए. फॉर एग्जांपल, इफ़ द प्राइस ऑफ एन आइसक्रीम कोन इंक्रीजेज फ्राम $2 to $2.20 and the amount you buys from the 10 to 8 cones, then your elasticity of demand would be calculated as like if you see that a percentage change in quantity, how we can calculate percentage change in quantity? Percentage change in quantity is equal to Q2 minus Q1 divided by Q1, and so here Q2 is 8 minus Q1 is 10 over 10, so this will be equal to minus 2 over 10.
multiplied by 100. So this is equal, so this is the term, upper term, so 20%. And then how we calculate the percentage in price? Percentage change in price is equal to, the delta is for change, that is equal to P2 minus P1 over P1 into 100. So here in this example, P2 is 2.20 minus 2 over 2, so that is equal to 0.2 over 2, so into 100. So if we calculate, make the calculation, substitute these values here, so we get this 20% over 10%, so that is equal to 2. So elasticity of demand in this case, in this example, the price elasticity of demand is 2. So how we calculate it? Percentage in quantity demand, and that is Q2 minus Q1 over Q1 into 100 divided by percentage in price, that is P2 minus P1 over P1 into 100. So if we calculate the values accordingly and substitute the values in the formula, so we'll get the price elasticity of demand, which is 2, which is minus 2. It should be minus 2. So but elasticity of demand is denoted by ED, and ED is equal to minus 2. Now why it is minus 2? Because of law of demand. As we know that the relationship between price and demand is negative, so that's why we have the answer in negative. But for explanation, अगर हमने इसको explain करना है, इसको बताना है, तो हमें we have to take mod, ED, mod, and this will make it positive, right? तो मैथमेटिक्स में जब किसी चीज़ का मार लेते हैं, जो नेगेटिव चीज़ होती है वो पॉजिटिव बन जाए. सो नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस इलास्टिसिटी. द आंसर इज 2. सो since now there are three basically possibilities. If ED is greater than 1, in this case the demand of the product will be elastic. If ED is less than 1, the demand of the product will be inelastic. If ED, the answer is equal to 1, the demand of the product will be unit elastic. Now, and there are two extreme possibilities also. When quantity demand does not respond to price changes, it remains same, so that is perfectly inelastic. And whenever quantity demand changes but the price remains same, in that case the demand is perfectly elastic. So normally we have these three possibilities. तीन conditions चीज़ें होती हैं, तीन तरह की answers आते हैं. Sometime we will get ED is equal to greater than 1. तो जब भी आपका answer जो है price elasticity का, and when you find elasticity of demand and that is greater than 1, तो आप कह सकते हैं इस चीज़ की जो demand है that is elastic. और जब भी less than 1 होगा तो उस आप कह सकते हैं demand of this product inelastic. और जब इसका आंसर 1 के बराबर होगा तो you can say the demand is. But what we all mean by all this? When we say that the demand for the product is elastic, what it means? It means if price change by 5%, the change in demand will be more than 5%, right? So in case of elastic demand, the change in demand will be more than the change in price. So this is what we mean by elastic demand. यानी कि जब कभी प्राइस में तब्दीली आती है, अगर डिमांड में उससे ज़्यादा तब्दीली आए तो उस चीज़ की इलास्टिसिटी को, उस चीज़ की जो डिमांड होगी उसको हम इलास्टिक डिमांड कहेंगे. जब हम ये कहते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ED is less than 1, it means the demand is inelastic. How we explain it? What it means? It means that whenever there is a change in price, the change in demand will be less than the change in price. In other words,
जब कभी प्राइस में तब्दीली आती है, अगर डिमांड में तब्दीली उससे कम आती है तो उस चीज की डिमांड को हम इनइलास्टिक डिमांड कहते हैं। और जो थर्ड पॉसिबिलिटी है कि whenever there is a change in price, if the change in demand is the same as the change in price, तो उसको हम यूनिट इलास्टिक कहते हैं। So this is what we mean by elastic, inelastic and unit elastic. तो मैं इसको रिपीट करता हूँ कि when we say that the demand of a certain product is elastic, what it means? It means कि जब भी कभी प्राइस में तब्दीली आएगी, अगर डिमांड में तब्दीली उससे ज़्यादा आती है तो उस चीज़ की जो डिमांड होगी वो इलास्टिक डिमांड कहलाएगी। If we say that the demand ED is less than 1, it means the demand is inelastic। और इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि whenever there is a change in price, जब कभी प्राइस में तब्दीली आती है, अगर डिमांड में उससे कम तब्दीली आती है तो उस चीज़ की जो डिमांड है उसको हम इनइलास्टिक कहते हैं। और जब हम यूनिट इलास्टिक की बात करते हैं तो उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर प्राइस और डिमांड में तब्दीली एक जैसी आती है तो जो उस चीज़ की डिमांड है दैट इज़ यूनिट इलास्टिक। और दो एक्सट्रीम केसेस की हमने बात की, परफेक्टली इनइलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक की बात की। परफेक्टली इलास्टिक कब होगी? जबकि क्वांटिटी डिमांड में कोई तब्दीली नहीं आती एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू चेंज इन प्राइस, वट एवर इज द प्राइस डिमांड विल रिमेन सेम, इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। एंड perfectly elastic means the price will remain same and demand will change infinitely, right? So in that case, when price remains same and demand will change infinitely, continue to change, so in that case that sort of the elasticity of that product is perfectly elastic। 4-5 possibilities हमने देखी कि there are different possibilities of the elasticity of a demand, that it could be elastic, the demand could be elastic, demand could be inelastic, demand could be unit elastic, demand could be perfectly elastic, demand could be perfectly inelastic। इसी चीज़ को, इसी फिनोमेना को, 5 पॉसिबिलिटीज़ को हम ग्राफ के ज़रिए भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें, आपको जो ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला डायग्राम है, इसमें क्या नज़र आ रहा है? ऑन वाई एक्सिस वी आर मेजरिंग एंड द प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी। उसी तरह अब आप देखें कि द डिमांड कर्व हेयर इज स्ट्रेट लाइन, व्हाट इट शोज दैट whatever is the price, the quantity demand is 100, right? So quantity demand does not respond to any change in price, so such type of the demand for such type of product is known as the perfectly inelastic demand, and this is the perfectly inelastic demand। So curves becomes completely steeper, right? हम as we know that the demand curve जो है हमारा कुछ इस तरह से होता है, like this, right? So in this case it has become completely inelastic, and when we talk about inelastic demand, so here we can explain when the demand is less, ED is less than 1. If ED is less than 1, it means demand is inelastic, and इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो ग्राफ में। उस साइड पे प्राइस लेते हैं, इस चीज़ पे डिमांड लेते हैं, और कर्व्स कंपैरेटिवली बिकम like this, right? It's not completely steeper, but it's more steeper। So when curves become steeper, so that reflect inelastic demand। यूनिट इलास्टिक जब बात करते हैं तो the normal shape of the curve, normal demand curve, when there is equal change in price and demand, तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है that shows the unit elastic, so when elasticity of demand equal 1। Fourth, elastic, when we say that the demand is elastic, when the answer of elasticity of demand is greater than 1, so in this case the curve, demand curve will comparatively become flatter। अगर इस डायग्राम में आप देखें, so the curve will become like this। So what it reflects, this curve shows, suppose we have a price here, any change in price will bring more change in demand, right? So this is the definition of an elastic demand curve,
जब प्राइस में तब्दीली आती है तो डिमांड में कहीं ज़्यादा उससे में तब्दीली आती है। इसी तरह आप इनलास्टिक में देखें तो प्राइस में जो तब्दीली आती है डिमांड में उतनी ज़्यादा तब्दीली इस ग्राफ में आपको नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ की जब इलास्टिसिटी की बात हम करते हैं तो इसमें आप देखें कि जो प्राइस में जब कमी आती है तो डिमांड में कहीं ज़्यादा इंक्रीज उसमें हो जाती है। तो सच टाइप डिमांड फॉर सच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज द इलास्टिक डिमांड। And lastly, the price elastic, when we have a perfectly elastic demand, whatever is the demand, price will remain same. So demand will continue to increase, but price will remain same. In this case, such demand of such product is known as the perfectly elastic demand. The curves completely become flatter. Now another important concept, how we can relate the concept of elasticity with revenue. किस तरह एक ये जो concept है, how this concept is useful for the manager, for the firm, and how they can use this concept to increase or decrease their revenue. So we would like to explain here, as we know that total revenue is equal to price into quantity. If you multiply the price of the product with its quantity, then we'll get the total revenue. Suppose the total quantity of a certain product is 100 unit, and if the price is per unit is 10, so if we multiply the total quantity, which is 100, by price of each unit, which is 10, 100 into 10 is equal to 1000 is the total revenue. So जब भी कभी आप इंटरेस्टेड हो कि आपने टोटल रेवेन्यू निकालना है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू टोटल क्वांटिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सो दैट विल गिव यू द टोटल revenue of product. Now how we can relate this concept of elasticity, price elasticity demand, with revenue? And this is the demand curve in front of you. So if we take any point on this curve, suppose we have taken this point on a curve like this point A. So at point A, the price of the product is 4 and the quantity demand is 100. So what will be the revenue here? So we multiply 4 with 100, so we'll get the revenue is 400. So this is how you can calculate the revenue of a firm, of a product, or revenue of the firm. Now how we can relate this concept with the concept of elasticity with the revenue? Look at a diagram on the left side. So when the price, if we have a point A here in the diagram, on the left side of the diagram, at this point A, we have a price of the product 1 and the quantity is 100 and revenue is 1000. But please keep in mind here the shape of the curve is inelastic, means we are explaining when the demand of the product is inelastic, and whatever is the whenever there is a change in price, so what will happen to the revenue? So please keep in mind, हम suppose ये करें कि जो demand है product की वो inelastic है. अगर demand product की inelastic होगी तो जब कभी प्राइस में कमी बेशी आती है तो उससे रेवेन्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी और व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ. सो डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनलास्टिक एंड विल सी whenever there is a change in price, what will happen to the revenue. Now अगर आप डायग्राम राइट वाले डायग्राम में देखें तो we have a point B here. At this point the price of the product is 3, against this price quantity is 80, revenue is 240. So what we can conclude from here, if the demand of the product is inelastic and if we increase its price, the revenue of the firm will increase. This phenomena can also be explained like this: total revenue is equal to price into quantity, right? हमने सपोज ये किया है कि द डिमांड जो है वो क्या है? इनलास्टिक.
जब डिमांड इनइलास्टिक होगी तो क्या होगा, प्राइस में अगर इजाफा होता है, प्राइस में इजाफा होता है तो डिमांड में जो कमी है, बाय लॉ ऑफ डिमांड कम होगी लेकिन उतनी ज़्यादा कमी नहीं होगी। तो ये जो इंक्रीज है प्राइस में, क्वांटिटी की डिक्रीज से कहीं ज़्यादा है, तो ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो फर्म का बढ़ जाएगा, राइट। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, हम इससे क्या नतीजा खर्च कर सकते हैं कि जब कभी किसी चीज़ की डिमांड इनइलास्टिक होगी तो उसकी अगर हम प्राइस बढ़ाएंगे, जो फर्म का रेवेन्यू है वो बढ़ जाएगा, बिकॉज अगर प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड उतनी ज़्यादा कम नहीं होगी। सो द इंक्रीज इन प्राइस इज मोर देन द डिक्रीज इन प्राइस, सो ओवरऑल द रेवेन्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज। सो इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, जब प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू फर्म का बढ़ जाएगा। तो दिस इज व्हाट दीज टू डायग्राम शोज। सो इन केस ऑफ इनइलास्टिक डिमांड, the increase in price will increase the revenue of the firm. Here the demand curve is elastic and we'll see what will happen if we change the price. So अगर आप लेफ्ट वाले डायग्राम में देखें, at price 4 quantity is 50, revenue is 200. Now suppose if price goes up from 4 to 5, in the right side diagram जब प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई या डिमांड क्या होगी, डिमांड कम होगी, 50 से 20 पे आ गई। सो इफ यू मल्टीप्लाई 5 with 20 टू फाइंड रेवेन्यू, सो 5 into 20 is equal to 100. You have seen that revenue of the firm has fallen from or has decreased from 200 to 100 revenue. So whenever the demand of the product is elastic, अगर आप किसी चीज की कीमत बढ़ाते हैं तो फर्म का रेवेन्यू कम हो जाएगा। कैसे? बिकॉज जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो डिमांड में जो कमी है उससे ज्यादा आएगी। हमने, क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक डिमांड इज दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्राइस, द चेंज इन डिमांड विल बी मोर देन द चेंज इन प्राइस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक डिमांड। तो यहां जब आप प्राइस बढ़ाएंगे, जब आप किसी चीज की कीमत बढ़ाएंगे तो उसकी जो डिमांड है बाय लॉ ऑफ डिमांड कम होगी, लेकिन इंक्रीज इन प्राइस से डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी। जो डिक्रीज है वो ज्यादा होगी, इंक्रीज जो है वो कम होगी, तो ओवरऑल जो फर्म का रेवेन्यू है वो क्या होगा, कम होगा। सो हमने क्या नतीजा खर्च किया, अगर किसी चीज की डिमांड इलास्टिक होगी और हम उसकी प्राइस बढ़ाते हैं तो जो फर्म का रेवेन्यू होगा ओवरऑल वो कम हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी विद रेवेन्यू। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन बिजनेस के इलास्टिसिटी, जब आप प्राइस कम या ज्यादा करते हैं एज ए मैनेजर, व्हेन यू वांट टू सेट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, तो आप उस चीज की डिमांड को जरूर मद्देनजर रखें। क्या उस चीज की डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है, अकॉर्डिंगली प्राइस कम या ज्यादा करें, अदरवाइज दिस विल इफेक्ट द रेवेन्यू ऑफ द फर्म। इस टेबल के जरिए अगर आप देखें तो एक हमने सम अप किया है तीनों पॉसिबिलिटीज को, कि कब जो है डिमांड किसी चीज़ की इलास्टिक होती है, कब यूनिट इलास्टिक होती है, कब इनइलास्टिक होती है। पहले कॉलम में अगर आप देखें तो वी आर मेजरिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, दूसरे में हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, और तीसरे में रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू। अब कैसे निकाला है ये कॉलम, कैसे रेवेन्यू मिला है हमें, हमने जस्ट वी मल्टीप्लाइड प्राइस विद क्वांटिटी। अगर हम पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो विल गेट दी total revenue of the firm. Suppose 7 into 0 0, 6 into 2 12, 5 into 4 20, 4 into 6 24, 3 into 8 24 and so on. Now percentage change, because you know for elasticity जो भी आपने फार्मूला देखा कि elasticity of demand जो है is equal to percentage change in quantity demand over percentage change in price, that is the change in quantity demand due to change in price, that is the elasticity. तो वो elasticity निकालने के लिए हमें percentage change in quantity भी निकालनी है और percentage change in price भी निकालनी है। जब हम percentage change in
प्राइस निकालेंगे तो वो क्या है कि पहले फर्स्ट की तो कोई नहीं होगी, बिकॉज यू नो परसेंटेज चेंज हुई, उसमें हम अगले से पिछले को निकालते हैं और पहले से डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट में आप डैश लगाएंगे और दूसरे में आप 6 - 7 ओवर, जब 6 - आप 7 करेंगे 1/7, तो आपकी परसेंटेज चेंज इन प्राइस आ जाएगी। इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद 100 सो यू विल गेट 15। सिमिलरली नेक्स्ट 18, 22, 9, 29, 40, 67 एंड 200. So percentage change in delta is for change in price will be equal to P2 minus P1 over P1 into 100, right? तो एक हम निकाल के देखते हैं, 6 - 7 over 7 into 100. So this is equal to minus 1 over 7, 100 over 7. So this is equal to 1, and then we have almost 5. So 15 is the answer. So similarly आप next 5 - 6 over 6, तो इसी तरह subsequent prices का आप निकाल सकते हो। इसी तरह percentage change in quantity किस तरह निकालते हैं हम, and that is percentage change in quantity, that is equal to Q2 minus Q1 over Q1 into 100, right? So here Q2 is 2 minus 0 over 0 into 100, 200. इसी तरह बाकी आप निकाल सकते हैं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। And now how to calculate elasticity? The formula for elasticity, as we know that ED is equal to percentage change in Q over percentage change in price. Now this percentage change in quantity, 200 by 15 we get 13. Now 67 by 18 we get 3.7. 40 by 22 we get 1.8. 29 by 29 we get 1. 22 by 40 we get 0.6. 18 by 67 we get 0.3. 15 by 200 we get 0.1. Now corresponding we can say that, so as we said that if elasticity of demand is greater than 1, so we call the demand of the product is elastic. So again 13, if you see in the table, it is the demand for this product is elastic. Next is also elastic because greater than 1. Next one also greater than 1, and the demand of this product elastic next is 1. So the demand of this product is unit elastic, then less than 1 inelastic, less than 1 inelastic, less than 1 again inelastic. So if the answer is greater than 1, so the demand of the product will be elastic. If the answer is equal to 1, the demand of the product will be unit elastic. And if the answer is elastic demand is equal to less than 1, and then the demand for such product is inelastic. This was the price elasticity of demand. So there are some other types of elasticity of demand जिनकी हम अभी बात करेंगे। जो नेक्स्ट जो है is the income elasticity of demand. अब income elasticity of demand बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने प्राइस इलास्टिसिटी की बात की, सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ क्या करना है, हमने प्राइस की जगह पे इनकम को लेके आ गए हैं। अगर डिमांड में जो तब्दीली आती है इनकम में तब्दीली की वजह से आती है, तो दैट काइंड ऑफ चेंज इन डिमांड इज नोन एज द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो हाउ वी कैन define this income elasticity of demand? It is the percentage change in demand due to the percentage change in income. So such type of elasticity of demand is known as the income elasticity of demand. Suppose for example I can explain you in the first column. If we take income y, we measure income with y, and next we take the quantity demand. Suppose income is 10,000, the demand is 20. Now if income goes up from 10,000 to 12,000, what will happen to the quantity demand?
ऑफ कोर्स इनकम के बढ़ने से वो बढ़ जाएगी. सपोज इट इज 25, राइट. नाउ how we can calculate the income elasticity of demand from this example? So as we said that the formula of income elasticity of demand is that percentage change in income over percentage change in percentage change in Q over percentage change in Y, that is income. Now what is percentage change in Q here? 25 minus 20 over 25 into 100. So this will be equal to 5 over 25 into 100. 5. So answer is 20. This is the percentage change in Q. Now what is the percentage change in income? That is equal to 12,000 minus 10,000 divided by 10,000 into 100. So this is equal to 2,000 divided by 10,000 multiplied by 100. So 100 is 10,000 and this is equal to 20. So this is also 20. So the income elasticity of demand in this case 20 over 20 is equal to 1. So here like in price elasticity of demand we have inelastic demand, elastic demand and inelastic. Here we have to explain the income elasticity of demand with respect to the types of goods, like we have normal goods and inferior goods. So higher income raises the quantity demand for normal goods, but the lower quantity demand for the inferior good and vice versa. अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी जो डिमांड है नॉर्मल गुड्स की बढ़ जाती है, और अगर आपकी इनकम कम होती है तो आपकी डिमांड नॉर्मल गुड्स की कम हो जाती है. एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स जो डिमांड है इंफीरियर गुड्स की विद इंक्रीज इनकम उनकी कम हो जाती है. तो इन दैट केस income elasticity for normal good will be positive and income elasticity for inferior good will be negative. So this is how you can explain the income elasticity of demand. It is similar, just we have replaced the price with income. So in this case income elasticity of demand will be equal to percentage change in quantity demand due to the percentage change in income. Here are some example in this slide of income. Goods consumer regard as necessities tend to be income elastic. So जो necessities होती हैं उनकी जो demand income elasticity होगी, that would be income elastic. Our example includes food, fuel, clothing, utilities and medical services. So all such type of goods which are necessities, so unki such type of goods have income elastic demand. And goods that consumer regard as luxuries like sports car, furs and expensive food, the demand income elasticity of demand would be income elastic, right? So you can differentiate. So what we said that अगर चीज़ें ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, necessities हैं, तो उनकी जो demand income elasticity है that would be inelastic, और जो necessities luxuries हैं उनकी जो होगी consumer regard those goods as income elastic. So this was the concept of income elasticity of demand. एक और जो concept इसी से related है, that is the cross price elasticity of demand. Now what is that? Now if you look at the word cross, it means the elasticity of demand of the related products, right? It is the measure of how much the quantity of demand of one good responds to a change in the price of another good. So computed as the percentage change in the quantity demand of the first good divided by the percentage change in the price of second good. So cross price elasticity of demand is calculated in terms of the related goods. Like
एज वी डिस्कस, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की कि डिमांड ऑफ रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कैन आल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ इट्स रिलेटेड प्रोडक्ट, जिसमें हमने बात की कि देयर आर सम गुड विच आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, देयर आर सम गुड विच आर कम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर। तो उन चीज़ों की जब कभी एक की प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो दूसरे की डिमांड इफेक्ट होती है। तो उन चीज़ों की हम इलास्टिसिटी कैसे निकालेंगे, तो उस चीज़ की इलास्टिसिटी को कहा गया है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और कैसे ये निकाल सकते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन दी डिमांड ऑफ क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड 1 ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन दी प्राइस ऑफ गुड 2। तो किसी दूसरी चीज़ की प्राइस की वजह से पहली चीज़ की जब डिमांड में तब्दीली आती है तो उसकी जो डिमांड है हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, और उसका फार्मूला है परसेंटेज चेंज इन द डिमांड ऑफ गुड 1 ओवर परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड 2। Here यहाँ पे we ends up with the elasticity of demand concept, so जिसमें हमने तीन तरह के elasticities की बात की। One is the price elasticity of demand, जिसको हम own elasticity of demand का नाम भी देते हैं। उसके बाद हमने income elasticity of demand की बात की, एंड तीसरी जो हमने चीज़ की बात की that was the cross price elasticity of demand। तो तीन तरह की elasticity of demand की बात की। अब जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है इस लेक्चर का, जो हम सीखने की कोशिश करेंगे, दैट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, हाउ वी कैन कैलकुलेट एंड हाउ वी कैन डिफाइन दैट। नाउ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ए मेजर ऑफ हाउ मच द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ ए गुड रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन द प्राइस ऑफ दैट गुड। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट, इट इज द परसेंटेज चेंज इन quantity supplied due to the percentage change in price। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि elasticity of supply is equal to, can be written as percentage change in quantity supplied over percentage change in price। Now suppose हम बात करते हैं, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक मिसाल के जरिए। पहले कॉलम में हम प्राइस, दूसरे में क्वांटिटी सप्लाई देते हैं। सपोज इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 10 एंड क्वांटिटी डिमांड इज 40। नाउ इफ प्राइस गोज अप फ्रॉम 10 to 15, व्हाट विल हैपन टू द सप्लाई बाय लॉ ऑफ सप्लाई, दिस विल आल्सो गो अप फ्रॉम 40 to 60। नाउ अगर आप देखें, सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि जो फार्मूले में रिक्वायर्ड चीजें हैं वो निकालनी है। अब रिक्वायर्ड चीजें क्या हैं, परसेंटेज चेंज इन QS, ये किस चीज के बराबर होगा, जैसे कि हमने पीछे कहा, इट इज S2 minus S1 over S1 into 100। Now what is S2 here? Second quantity, this is S1, so 60 minus 40 over 40 into 100, this will be equal to 20 over 40 into 100. If you simplify this, you will get 50, right? Similarly, the second part which is required in the formula is the percentage change in price, and that is equal to P2 minus P1 over P1 into 100. So this is P2, this is P1. So what we do that 15 minus 10 over 10 into 100. This is 5 over 10 into 100. This is 2, this is 50. So 50 here. So elasticity of supply will be equal to 50 over 50. That is equal to unit elasticity of supply. So answer is 1. So this is how you can calculate the price elasticity of supply. So percentage change in quantity supply divided by percentage in supply, कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ हमने वहाँ डिमांड की बात की, यहाँ पे हमने सप्लाई की बात करनी है। द रिमेनिंग प्रोसीजर जो जिस तरह हमने डिमांड में हमने कैलकुलेट की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसी तरह इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है। जस्ट वी आर रिप्लेसिंग द वर्ड विद सप्लाई, डिमांड की जगह पे हमने सप्लाई का वर्ड रिप्लेस कर दिए।
अगर आप उसी तरह हम एक्सप्लेन करें कि द इलास्टिसिटी विल बी इनलास्टिक, कुछ चीज़ों की सप्लाई जो इनलास्टिक होती है, कुछ चीज़ों की सप्लाई इलास्टिक होती है, परफेक्टली इलास्टिक भी होती है, परफेक्टली इनलास्टिक। जिस तरह हमने डिमांड में बात की, अगर पहले डायग्राम में देखें वो ये स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व, वट एवर इज द price, that supply will remain same. So such type of curve is known as the perfectly elastic supply curve, and elasticity equals 0 here. अगर आप नीचे वाले डायग्राम में देखें, here the elasticity of supply is less than 1, comparatively ये जो कर्व है, supply कर्व है, is steeper. So जो प्राइस में तब्दीली की आती है सप्लाई में, उससे कम तब्दीली आती है। जब हम प्राइस में तब्दीली से सप्लाई में कम तब्दीली आए, जैसे कि हमने डिमांड में बात की, उसके इनलास्टिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया कि इनलास्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि जब कीमत में तब्दीली आती है, सप्लाई में तब्दीली उसमें उससे कम आए, तो हम कहते हैं कि उस चीज़ की सप्लाई जो है इनलास्टिक है। इसी तरह हमने डिमांड में बात की थी कि जब कभी प्राइस में तब्दीली आती है, डिमांड में उससे कम तब्दीली आती है, तो उस चीज़ की जो डिमांड है इनलास्टिक होती है। उसी तरह यहाँ पे जब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं, तो वेन एवर देयर इज अ चेंज इन प्राइस, अगर डिमांड सप्लाई में उससे कम तब्दीली आती है, तो हम कहेंगे उस चीज़ की जो सप्लाई है इनलास्टिक है। जो कि इस डायग्राम से जाहिर हो रहा है कि प्राइस में जो तब्दीली ज़्यादा है और डिमांड सप्लाई में जो प्राइस में तब्दीली ज़्यादा है, सप्लाई में तब्दीली कम है। तो दिस शोज दैट द elasticity of this product is inelastic. This curve is comparatively flatter and is normal supply curve. So there is equal change in price and supply, and we can say that this is the unit elastic supply curve. And अगर नीचे वाले आप डायग्राम में देखें, this is a curve which is comparatively more flatter. और अगर आप नोट करें तो प्राइस में जो तब्दीली है वो कम है और सप्लाई में तब्दीली ज़्यादा है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कर्व कि व्हेनेवर द चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द चेंज इन प्राइस, सो दैट इन दैट केस द इलास्टिसिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट विल बी इलास्टिक सप्लाई. So here this is the elastic supply curve and the elasticity is greater than 1. In this case price remains same. It is a perfectly elastic supply, so complete flatter curve, price will remain same and quantity supply will increase infinitely. In this case, when price is 4 and quantity supplied is infinite, in that case the demand supply of this product is perfectly elastic supply, and elasticity will be equal to infinity. So in case of perfectly inelastic, the elasticity will be equal to 0. So जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ की सप्लाई परफेक्टली इनलास्टिक है, तो उसका जो आंसर है 0 के बराबर होगा। और जब हम कभी कहते हैं कि जो प्रोडक्ट की सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है वो परफेक्टली इलास्टिक है, द आंसर विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये हमने वी हैव एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने कहा कि देयर आर 5 पॉसिबिलिटीज़, कि पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट could be inelastic. Inelastic means that whenever there is a change in price, the change in quantity supply will be less as compared to the change in price. So such type of elasticity को हम क्या कहेंगे? Inelastic supply. उसके बाद हमने बात की elastic supply की, and what is that? So whenever there is a change in price, the change in supply will be more than the change in price. So for such product the supply elasticity will be elastic. And we have discussed unit elastic when there is equal change in price and supply, so that is elastic supply. And we have discussed perfectly inelastic, price whatever will be the price, quantity will remain same. In this case the such type of elasticity is known as the perfectly inelastic supply. And
the answer elasticity will be equal to 0. And lastly, we have discussed the perfectly elastic supply. So price will remain same, quantity will go up to infinitely. So this quantity will keep on changing, price will remain same. So in that case, the elasticity will be perfectly elastic supply. And now after this, the determinants, as we have discussed the determinants of price elasticity of demand, and we have also the determinants of elasticity of supply. Now ability of number one is the ability of seller to change the amount of good they produce. So if there is a change in the ability of producer, means if they have more resources in terms of human resources, in terms of capital resources, so of course they can change the elasticity of supply. And the second factor that can affect the elasticity of supply is the time period. So if as the time period is long, the supply will be comparatively more elastic. If the time period is short, so the elasticity will be, because supply elasticity will be inelastic. So supply is more elastic in the long run, and supply is comparatively inelastic in the short run. So the price elasticity of supply is computed as the percentage change in quantity supplied divided by the percentage change in price. Now the last part of the lecture is about how we can apply the concept of elasticity in business environment and at the economy level. So this is a very very useful concept. जैसे कि हमने शुरू में कहा कि हम जो इलास्टिसिटी के ज़रिए देखना चाहते हैं कि अगर प्राइस में तब्दीली आती है तो डिमांड में भी तब्दीली आती है, लेकिन with the concept of elasticity we can come to know, we can know that कि अगर प्राइस में 5% तब्दीली आती है तो डिमांड में 5% से ज़्यादा तब्दीली आती है या कम तब्दीली आती है. तो this is here we can use the concept of elasticity, और elasticity के ज़रिए हम ये चीज़ मेजर कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की जो elasticity है वो elastic है, inelastic है या inelastic है. और as a manager, as a business students, जब आप कहीं काम करेंगे MBA करने के बाद, जब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, तो you will be a manager, you will be leading an organization, and at some stage maybe you need to fix the price of the product. तो जब आप कभी किसी चीज़ की प्राइस आप फिक्स करने लगेंगे, प्राइस बढ़ाने लगेंगे या कम करने लगेंगे, तो आप you can get benefit from the concept of elasticity. अगर आप देखते हैं अगर उस चीज़ की डिमांड जो है इनएलास्टिक है, तो अगर आप प्राइस ज़्यादा भी बढ़ा देंगे तो उसकी कोई डिमांड इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी. अगर आपको पता है कि उस चीज़ की डिमांड इलास्टिक है और अगर प्राइस आप ज़्यादा कर देते हैं तो उसकी डिमांड जो है कहीं ज़्यादा कम हो जाएगी, राइट. तो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट जो है इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी अप्लीकेबल इन बिजनेस एनवायरनमेंट. जब भी कभी आप डिसाइड करते हैं कि आप हाउ मच यू प्रोड्यूस, हाउ मच यू सेल इन द मार्केट एंड व्हाट प्राइस यू शुड चार्ज एंड हाउ, हमने ये भी देखा कि जो इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट है और रेवेन्यू का क्या रिलेशनशिप होता है. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट इलास्टिक है, इनएलास्टिक है, तो उस पर रेवेन्यू की पे. तो हेयर यहाँ पे जो है इन अगली एक दो स्लाइड्स में हम एक दो पर्टिकुलर एग्जांपल्स की बात, स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी को अप्लाई करेंगे. सो पहली जो एग्जांपल है, कैन गुड न्यूज़ फॉर फार्मिंग बी ए बैड न्यूज़ फॉर फार्मर? What happens to wheat farmers and the market for wheat when university agronomists discover a new wheat hybrid that is more productive than the existing varieties? क्या होगा जब हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो एग्रोनोमिस्ट हैं, अगर उन्होंने कोई एक नई वैरायटी निकाल ली है वीट की, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड a new variety of wheat, तो what will happen to the farming, wheat farming? What will happen to the farmers? What will happen to the growers? क्या फ़र्क पड़ेगा? Again, this will, here comes the concept of
इलास्टिसिटी। सो एप्लीकेशन हम क्या इसकी कैसे डिफाइन करेंगे? एग्जामिन वेदर द सप्लाई एंड डिमांड कर्व शिफ्ट, क्या होगा, वेदर डिमांड विल शिफ्ट और सप्लाई विल शिफ्ट। डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट, क्या राइटवर्ड शिफ्ट होगी, लेफ्टवर्ड, अगर सप्लाई बढ़ेगी कम होगी, डिमांड बढ़ेगी कम होगी, किस वर्ड शिफ्ट होगी। एंड यूज द डायग्राम टू सी व्हाट विल हैपन टू द इक्विलिब्रियम। तो ये हम इस नीचे वाले डायग्राम में इसकी बात करेंगे। अगर आप इस डायग्राम में देखें, we have a demand curve, we have a supply curve S1 and the market is in equilibrium, and these two curves are intersecting each other at, let us say इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट A कहते हैं तो पॉइंट A पे जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं और मार्केट इक्विलिब्रियम में है, और यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस है दैट इज $3 और डिमांड जो क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई इज 100। नाउ सपोज ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू व्हीट वैरायटीज, जो कि रिसर्च के बाद नई वैरायटी आई, तो व्हाट विल हैपन, सप्लाई बढ़ जाए बिकॉज एग्जिस्टिंग वैरायटीज भी हैं, नई वैरायटीज भी आएंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। जब सप्लाई ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्राइस कम हो जाएगी, और प्राइस जब कम होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, वेदर द फार्मर विल बी बेटर ऑफ और वर्स ऑफ। यस, फार्मर विल बी वर्स ऑफ बिकॉज यू नो द प्राइस हैज गॉन डाउन because of the increase in quantity supplied. So this is how the concept of elasticity is applicable. When demand is inelastic and increase in supply and a proportionate smaller increase in quantity sold, as a result revenue will fall from $300 to $200। जो पहले revenue था फर्म का कितना था 200, अब जो revenue है अब कितना है, that is 300, sorry, if you multiply the 3 with 100, so the revenue was at initial equilibrium was 300. Now at a new equilibrium at point B, the price is 2 now and the quantity sold supplied is 110, so 2 into 110 is equal to 220, so there is a fall in revenue from $300 to 220। तो हमने क्या देखा कि जब एक नई वैरायटी आई वीट की जो कि रिसर्चर ने इंट्रोड्यूस की, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा सप्लाई पे, सप्लाई बढ़ गई और सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। जब सप्लाई बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी कीमत कम होती है, जब कीमत कम होगी तो क्या होगा, जो रेवेन्यू है वो ग्रोअर्स का, फार्मर्स का, वो कम हो जाएगा। सो लेकिन वाई ऑल बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज हमने देखा कि हमने सपोज किया द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक। जब डिमांड इनइलास्टिक होती है तो जब हम उसकी प्राइस कम होती है तो क्वांटिटी डिमांड पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। सो इलास्टिसिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल कॉन्सेप्ट, एंड जिसकी वजह से हमने देखा कि उसकी सप्लाई बढ़ने के बावजूद भी उसका रेवेन्यू कम हो गया फार्मर्स का, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द इनइलास्टिक डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं और उसके बाद इस लेक्चर को ख़त्म करेंगे। Why did OPEC fail to keep the prices of oil high? Because of the OPEC is basically the oil producing and exporting countries. We can see that this example with the help of two diagrams. In diagram 1, the short run when supply and demand are inelastic lead to a larger increase in price. So यहाँ पे हम बात करेंगे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की। जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, वो शॉर्ट रन में तो प्राइस को ज़्यादा तब्दील कर सकते हैं और क्वांटिटी पे कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर डिमांड एंड सप्लाई इज इनइलास्टिक। बट इन द लॉन्ग रन क्या होगा, व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड आर इलास्टिक, देन देयर विल बी ए स्मॉल चेंज इन प्राइस। दूसरे डायग्राम अगर राइट साइड पे देखें तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज़ वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। कि हमने देखा कि शॉर्ट रन में क्योंकि जो इलास्टिसिटी है डिमांड और सप्लाई की वो इनइलास्टिक होती है, जब इनइलास्टिक होती है तो प्राइस में बहुत ज़्यादा तब्दीली भी कोई डिमांड और सप्लाई में ज़्यादा तब्दीली नहीं ला सकती, तो उससे रेवेन्यू जो है उनका ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का बढ़ जाता है। बट इन द लॉन्ग रन व्हेन द डिमांड
and supply of the product is elastic, so any change in price will bring a major change in quantity, demand and supply, and in that case the revenue of the firm cannot be affected as much as it is affected in the short run. So the concept of elasticity is very useful for the manager, for the economies, for the businessman. So whenever you want to decide the price of the product, whenever you want to increase or decrease the revenue of the firm, whenever you want to fix the quantity of a product production, when you want to decide the supply of the product, you need to look at its elasticity in terms of demand and supply. तो यहाँ पे आज का लेक्चर हम इख्तिताम करते हैं, ख़त्म करते हैं. Before ending up the lecture, I just revise and summarize what we have learned today in lecture number 4. So we started with the price elasticity of demand, and we said that it is the change in demand due to change in price, and how we can measure that. The percentage change in demand due to percentage change in price, and this will give us the elasticity of demand. And we have seen that there are 3 possibilities. If the elasticity of demand is greater than 1, the demand of that product will be elastic. If elasticity of demand is less than 1, the elasticity of demand will be inelastic. If elasticity of demand is equal to 1, then the demand of that product will be unit elastic. And we have also discussed the 2 extreme possibilities: perfectly inelastic, perfectly elastic. So perfectly inelastic means whatever is the price, the quantity will remain same. So in that case, the demand for such product is perfectly inelastic. Perfectly elastic is the last type of elasticity of demand, and in which the price remains same and the quantity will be different. So the demand of such product will be perfectly elastic. After that we have discussed, हमने बात की income elasticity of demand की, and we said that income elasticity of demand is equal to the percentage change in demand due to the percentage change in income. So we have just replaced the price with income. So जब भी कभी आप, और इसमें हमने देखा कि 2 तरह की अशिया होती हैं, नॉर्मल गुड्स होती हैं और इंफीरियर गुड्स होती हैं. And we said that the income effect the income elasticity is positive in case of normal goods, and income elasticity of demand is negative in case of inferior goods. तीसरी जो हमने टाइप ऑफ इलास्टिसिटी की बात की इन टर्म्स ऑफ इज दी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. हमने देखा कि कुछ अशिया जो एक दूसरे से मुंसलिक होती हैं, रिलेटेड होती हैं, लाइक सब्स्टिट्यूट एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो उनकी इलास्टिसिटी कैसे निकाली सकती है. तो उनकी इलास्टिसिटी निकालने के लिए जो हमने टर्म यूज़ की, दैट इज़ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is equal to the percentage change in the quantity demand of good 1 due to the percentage change in the price of good 2. So this is the formula जो कि हमने यूज़ किया या यूज़ कर सकते हैं for the cross price elasticity of demand. उसके बाद हमने बात की supply elasticity, price elasticity of supply की. So price elasticity of supply is equal to the percentage change in quantity supplied due to the percentage change in quantity, percentage change in price. तो उसी तरह हमने बात की सप्लाई की जो इलास्टिसिटी है, it could be elastic, it could be inelastic, unit elastic, perfectly inelastic and perfectly elastic. And lastly हमने बात की application of elasticity की, कि this is very important concept. It is applied in all business environments, and it can be applied in at the economy level, जिसमें हमने 2 एग्जांपल्स की बात की. हमने एक पहली एग्जांपल में देखा कि if जब एक the university researcher agronomist, if they introduce a new variety of wheat, so what will happen to the supply of wheat? Of course the supply will increase, and if the demand of the wheat or the product is inelastic, so what we have seen that demand is inelastic, तो सप्लाई के बढ़ने से प्राइस क्या होगी, कम होगी,
लेकिन उतनी ज़्यादा कम नहीं होगी जितनी कम होनी चाहिए, सो बिकॉज ऑफ इनलास्टिक डिमांड। सिमिलरली हमने दूसरी एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की एप्लीकेशन को। दूसरी जो एग्जांपल हमने ओपेक की बात की, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की बात की, जो कि हमने देखा कि how and when they can change the price of oil, and we have seen that whenever the period is short run, if they change the prices of oil in the short run, so the quantity, the change in price will be more as compared to the change in quantity, demand and supply, because the demand and supply curve will be inelastic, and in the long run the curve will be inelastic and the change in quantity will be more than the change in price. So जब भी कभी आप डिसाइड करना चाहते हैं कि आप how much you want to produce, how much you want to sell, how much you want to earn, what price you want to fix, so whenever in making all these decisions, जितने भी आपने फैसले करने हैं उसमें कहीं ना कहीं इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहाँ पे हम ख़त्म करेंगे। तो आज हमने जो चैप्टर कवर किया है दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर 4 जो हमने कुछ हिस्सा कवर किया। सो चैप्टर 5 तक जो है, जो आपका टेक्स्ट बुक है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय मनकीफ, तो आज 5 चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं, तो आप इनकी रीडिंग करके आइएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड सी यू इन नेक्स्ट क्लास।